Chemical Effects of Electric Current, Class 8 Science, Chapter 14. Chemical effects of electric current. So in this chapter we are going to study about electroplating, how does it works, okay, electrolysis, etc. Number 1, solution that allows an electric current to pass through it are known as conductor. So if we are talking about electricity conductor, then metals are the one that allow electric current to pass through them, okay. Then next we have insulator. What is insulator? It does not allow electricity to pass through them. For example, rubber, mica, asbestos, paper, etc. Okay. So conduction is what? Passing of electric current through any substance. And if it passes through liquid, then liquids are examples tap water, salt solution, hydrochloric acid, sodium hydroxide. These are the examples through which the liquid electric current pass through them. Next is insulator. Insulator is what? It is a liquid through which no current is passed, like sugar solution, water, distilled water, kerosene, spirit. These are the one through which electric current is not passed. Next is LED. So we all know, are familiar with LED. What's its full form? Light emitting diode. जो लाइट डायोड देते हैं, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड. ओके, सो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मेड ऑफ जनरली LED, and we have also CFLs. Okay, so these are also examples of you can say less electric is being used to glow the electric bulb. So this can even glow in the weak flow of current. That is why it is known as light emitting diode. And even when current is low, they are being glowing. Okay, next is when two wires are of unequal length attached to it. It is called lead or terminal. So the longer the lead, the positive terminal is always connected. With the shorter lead, a negative terminal is always connected. So two wire of unequal length, one is of long positive terminal connected and short is of negative terminal connected to a battery. Now what is battery? A group of two or more cells connected together end to end is known as battery. Okay, now we have different colors of LED. Why they are red, green, yellow, white and blue? Because of different chemicals in it. That is why they glow very differently. Okay, next is electrical conduction through water. So conductivity in water. So we have two water. One is a distilled, which is a poor conductor, and one is the impure or the tap water, salt water, through which the current pass. So if we add salt to the pure water or fruit vegetable juice to the water, or with the distilled water anything which is an impurity, so that will become a impure water and it can be a good conductor of electricity. Tap water is also impure. That is why it has a very electric conductivity through it. That is why don't touch any water when current is passed through it. Okay, because the electricity will immediately pass through the tap water. Now next is chemical effect of electric current. So the number 1 is electrolysis. Electrolysis, what is this? It is a process through which a chemical change in solution by passing an electric current, okay, through it is known as electrolysis. यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का, जब हम इसमें से करंट को पास कर रहे हैं, उस सोल्यूशन को हम चेंज कर दे रहे हैं. जैसे अगर मान लीजिए हमने दो सोल्यूशन लिया है, एक कॉपर लिया है एंड अदर एक आयरन लिया है, तो कॉपर जो है वो उसमें डिजॉल्व होने लगेगा. फॉर एग्जांपल कोई भी एक सोल्यूशन आपने लिया, उसमें कॉपर डिजॉल्व होगा, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग बाय electrolysis. Now what is electrolyte? The solution or paste which contain electrode and conduct current itself is known as electrolyte. Like the solution which can conduct electricity through itself. जो electrolyte होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है. ये कॉपर और विनेगर का सोल्यूशन है. कॉपर वायर को डिप कर दिया हमने 8 to 10 आवर्स. अब इसने क्या किया, अपना कॉपर जो है इसमें सोल्यूशन में डिजॉल्व हो गया विनेगर में, ठीक है. और जैसे ही इसमें करंट पास हुआ, एक पॉजिटिव टर्मिनल पे एनोड पे कॉपर लगा है, दूसरे कैथोड नेगेटिव टर्मिनल पे आयरन लगा है. तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है यहाँ पे, और फिर बाद में इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम देखेंगे. ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपको आई होप सो समझ आ गई हो. ओके, नेक्स्ट. So electrolysis is a process by which the chemical change
occur in the solution by passing an electric current through it, and this is known as electrolysis. The solution or the paste which contain electrode and conduct the current itself is known as electrolyte. तो एक ऐसा solution जो जिसके अंदर इलेक्ट्रोड और दोनों करंट पास हो तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. इसे हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं. एक ऐसा सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से करंट पास कराए. ओके, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. नेक्स्ट, व्हेन ए करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टिंग सोल्यूशन देन इट इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन. तो वहाँ पे कुछ केमिकल चेंज होगा. जब किसी भी कंडक्टिंग सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा. ठीक है, अब केमिकल इफेक्ट्स क्या है इलेक्ट्रिक करंट के, तो आपने अभी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा. नाउ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है. तो इलेक्ट्रोड होता है 2 कॉपर वायर डिप्ड इन अ सोल्यूशन. 2 कॉपर वायर आप डिप कर दोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. एक नेगेटिव क्या होगा, कैथोड होगा. ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज कैथोड एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज एनोड. ठीक है, तो 2 कॉपर वायर आप डिप करेंगे तो दोनों का नाम इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पॉजिटिव को बोलेंगे एनोड, ठीक है, एंड नेगेटिव को बोलेंगे कैथोड. वोल्टामीटर होता है जो मेजर करे वोल्टेज को. ठीक है, ये कंटेनर में वोल्टामीटर हैज़ अ कंटेनर विद एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड वेसल कंटेनिंग इलेक्ट्रोड. ओके, तो इसमें इलेक्ट्रोड होगा यानी 2 कॉपर वायर होंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा यानी कि एक सोल्यूशन होगा जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो, और वेसल कंटेनिंग देम. दिस इज नोन एज वोल्टामीटर, and voltmeter measures the volt. Now next, who has discovered electrolysis? So electrolysis of water was discovered by William Nicholson. Okay, in 1753 to 1815 he was there, and he found out that bubbles of oxygen was formed at anode, that is a positive terminal, whereas bubbles of hydrogen gas is formed at cathode. Okay, तो water अगर टूटेगा तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में टूटेगा. अगर एनोड है तो ऑक्सीजन एनोड की तरफ बबल्स आएंगे, एंड द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन इज ऑन cathode, and hydrogen is plus charge and oxygen is minus. Okay, so next is gas bubble is evolved at the electrode. Okay, next, color of electrolyte solution also change. ठीक है, कलर भी चेंज होगा. मेटल डिपॉजिट होगा एट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड और नोन एज कैथोड. तो मेटल जो है वो कहाँ डिपॉजिट होंगे, आपके कैथोड पे. वेरी मच रिमेंबर, नेक्स्ट आपके एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड टर्मिनल पे मेटल कैसे डिपॉजिट हो रहा है. इसी के थ्रू आप इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस यू विल सी इट. ओके, now chemical effects of current is electrolysis is the decomposition of chemical compounds present in the electrolyte on the passage of current through it. तो electrolysis एक ऐसा process है जिसमें डिकम्पोज हो रहा है केमिकल कंपाउंड जो इसके अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट में. जब आप किसी भी करंट को इसमें से पास करा रहे हैं तो डिकम्पोज हो रहा है केमिकल कंपाउंड. अगर कॉपर है तो कॉपर डिकम्पोज होगा, कॉपर सल्फेट हो तो कॉपर और सल्फेट अलग अलग हो जाएगा. तो अगर करंट पास कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू केमिकल कंपाउंड्स जो होंगे वो डिकम्पोज होंगे. ये इसका एप्लीकेशन है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन. जोहान विलियम रिटर ने भी देखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, तो इसका एक ब्रेक थ्रू आया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ. तो केमिकल कमर्शियल इंडस्ट्री रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल को प्योर बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करेंगे. ओर्स को, ठीक है, ओर्स में से मेटल को निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस. एंड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच इज़ वेरी मच इन यूज इज़ डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस. तो इसके 3 एग्जाम्पल है. नंबर 1, रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल, नंबर 1. नंबर 2, extraction of metal from ore, and number 3 is electroplating. Now we will study of electroplating. So what is electroplating? Coating of thin layer of metal over another metal by passing electric current. Coating a thin layer of metal over another metal by passing electric current is known as plating or electroplating. Okay, तो एक के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दिया, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अलॉय मेटल. सो व्हाट इज अलॉय मेटल पे अगर आप देखे होंगे कि देयर इज अ चीपर मेटल विच इज अलॉय मेटल, ऑन दैट वेरी शाइनी मेटल इज प्लेटेड सो दैट इट विल बी फैंसी और इट विल बी प्रोटेक्टेड द अदर मेटल. तो आप क्या करेंगे, अलॉय मेटल के ऊपर एक शाइनी मेटल की कोटिंग करेंगे, बाय पैसेज एक करंट सप्लाई करेंगे. ठीक है, किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में आप डाल सकते हैं कंपाउंड कंटेनिंग द मेटल. अब जो ये कंपाउंड होगा इसमें ये शाइनी मेटल ऐड होगा, और जब ये करंट पास होगा इस एसिडिक सोल्यूशन में से तो अलॉय के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ कोटिंग लग जाएगी विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज
Process of depositing of layer of desired metal on the other material by means of electricity is known as electroplating. So अगर आपको किसी भी मेटल को डिपॉजिट करना है किसी भी लेयर पे, ठीक है, कोई भी आपका मेटल है और उसकी एक आपने डिज़ायर्ड लेयर दूसरे मेटल जो नीचे हो सकता है लो क्वालिटी का मेटल हो, ऊपर एक अच्छी क्वालिटी के मेटल से आपको डिपॉजिशन कराना है, तो ये बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज electroplating. Once again, the process of depositing of a layer of desired material on the other material by the means of electricity is called as electroplating. Now next, what are the examples of electroplating? So musical instruments, fitting of fancy lights, decoratives, taps, okay, nal jo hota hai, wrist watches, we have belt, we have buckles, we have sink, we have some jewelry. All these use electroplating. That is why it is so much attractive and fancy looking. Okay, next, now see an example here. A copper coil is in an electrolyte with a vinegar solution, and it is being coated onto an iron nail, and you remember that the coated material is at the negative terminal, which is the cathode, and the whatever metal is to be coated onto the next metal is to be at anode. So copper जो है वो anode पे होगा क्योंकि आप copper की coating करेंगे आप iron पे, ठीक है. तो जब कॉपर आप इसे डिप कर देंगे, when you dip this wire for 8 to 10 hours, it will release the it will being mixed with the copper and vinegar solution, and this is known as an electrolyte solution. Now next, what happens when you pass an electric current for 30 to 40 minutes, a thin coating is being done on the iron nail, and this thin layer of copper formed in the iron nail is known as electroplating method. So free copper ions or positive ions are loosed into the vinegar solution, and this will go on to the iron. Okay, now two things are very much important in electroplating. Number one, how much time the electricity is passed through it, okay, and the amount of current passed through it, यानी कितना ज़्यादा करंट पास हुआ है, कितनी देर तक पास हुआ है. अब आपको ज़्यादा करंट पास कराना है तो यू विल अटैच मोर बैटरी इनटू इट, ठीक है. यहाँ पे बैटरीज आप 1 2 3 की जगह 8 बैटरीज लगा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा थिक आपकी प्लेटिंग होगी, ठीक है. तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इससे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होगा ऑब्वियसली. नेक्स्ट, अगर आप देर तक इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 to 3 hours, देन मोर इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द other metal. So this is the two things. Number one, the time must be increased, and number second, the amount of current passed through electrolyte should also be increased. Okay, next, electroplating has two methods we have seen here. Number one, we are using it to protect the metal which is underneath the next one, and number second is to produce an attractive finish. So electroplating is to increase and one more thing, electrode deposition, you can see here, it is the increase of thickness of parts of machine to make them a right size is known as electrode deposition. मतलब उसे कितने साइज का बनाना है आप उसे मशीन के पार्ट्स के लिए, तो यू विल यूज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो डिपॉजिशन. और इसके अलावा अट्रैक्टिवनेस एंड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर प्रोटेक्टिंग द मेटल वी यूज़ क्रोम प्लेटिंग. ओके, so in the chrome plating, what is done, the chromium metal is which is non-corrode, not scratched and shiny metal, it is to be plated onto the iron metal, which is a cheap and strong, but it is used in very utility items like window frame, grills, the body of gas stove, etc. So we will do the chrome plating onto the iron metal. And the bathroom accessories, kitchen appliance, fancy lights, fitting electrical appliance, this is done for making them more protective. Now next is what, attractive finish. So attractive metal are electroplated, for example artificial jewelry. They having ordinary metals which is plated by silver and gold for royal appearance, or some silver metal is being plated with gold to make them very attractive. Next is cutlery, which is made of cheap metal, can be plated with silver for its good appearance. Okay, now we have some hard facts. Electrolyte is a conducting solution in electroplating factories, but what is a major environment concern, because of which is very toxic, we have to make it safe to disposal and less toxic. That is why if it is untreated electrolyte solution, then it will be major environmental hazard. Okay, now occupational hazard is also there due to chromic acid which is used in chrome plating. We have chrome sores, chrome ulcer and perforated septum, and chromic acid is also carcinogenic. That is why chrome plating should be banned, but due to its low cost and easy to use, it is still being
use. So they have two hazard, one is the environmental and one is the occupational hazard. So this is all about the chemical effects of electricity. Thank you. If you like this video, please subscribe to my channel Amplify Studying for more such videos. Thank you.